Good afternoon and hello and welcome to Revsportz. I've just come out after attending Salman Agha's press conference, and I must say, the Pakistan captain on the match ahead of the India game, the Pakistan captain was non-combative. He answered to the questions with dignity. He was asked about the handshake thing, whether there will be handshakes between the players of the two teams tomorrow. And he said, look, I feel that cricket should be played in the spirit, the way it had been played for so long. Now, whether handshakes will happen or not, it is up to them, it is up to the Indian team. Now, when the Indian players refused to shake hands with their Pakistani counterparts at the Asia Cup, they had a very, very valid reasons. The terror attack in Pahalgaon that claimed 26 innocent lives, that created a deep scar in the psyche of the nation. And the Indian player, there has to be a carryover on the cricket field, because cricket cannot be played in isolation. Sport cannot live in isolation. And the Indian players had every reason to snub the handshakes with their Pakistani players. And some of the gestures made by some of the Pakistani players, even on the field, ICC had hauled them up, but that was way out of order. Pakistan speaks about not mixing sport with politics, but their administrators do that, their government does that, and their players, sometimes even their players do that. Moving on to tomorrow's game, as I speak, cloud is hovering around and it is getting a little dark. There is forecast of rain tomorrow. There is an alert of a low pressure zone has formed, and it might affect the game. The upside is that the outfield at the Premadasa Stadium, it's a very quick drying ground, and they have the facility to cover the entire outfield. So if there is no rain, the game can be match can be resumed within half an hour after the rain stops. But if it is a torrential rain, then that is a problem. Now given that there is rain threat, that might influence the team management's thought process as regards the team combination. We have seen the last couple of matches, Pakistan went with 5 spinners. They were spin heavy. They went with 5 spinners. But if there is rain in the air, there is every possibility they can bring on an extra fast bowler at the expense of a spinner. Now, this question I asked Salman Agha, and he said, see, we have all the bases covered. I also asked him whether, now they are staying put at Colombo, and they have been here since the first week of this month, and they are acclimatized to the conditions. Will that give them an added advantage? And Salman Agha, he put things in perspective. He said, it's not about, yes, we are best out of Colombo, we are playing all the matches in the city, but at the end of the day, you have to play well on the field. You have to play well in the game. Otherwise, it means nothing, acclimatization or whatever. Obviously, the questions came about Usman Tariq and his action. And Salman Agha said, look, he is someone, for us, he is one of the squad members. You have made them big, but you have to keep in mind that his action was cleared by the ICC twice. So he absolutely doesn't care about what people have been talking as regards his action. He will go about his job calmly, the way he does. People asked him about
Babar Azam's role in the team, and he said Babar Azam, he's doing fine. The way, and he is the exact role that he has been given. He is doing that. Once again, someone asked him about whether if Abhishek Sharma misses out on tomorrow's game, because Abhishek Sharma missed the last game between India and Namibia as he was recovering from a stomach bug that saw him hospitalized even. Now, Salman Agha was asked about Abhishek's, and Abhishek, he's an X factor. Of 25 balls of Abhishek Sharma in the power play, and it could be done and dusted for Pakistan. But Salman Agha said, we want Abhishek Sharma to play because we want to test ourselves against the best. And Abhishek Sharma is one of the best. So he has been pretty generous in the sense. He has been pretty generous. But all said and done, the way as it stands might play, it could be a truncated game. And in that case, toss might be a factor. Although Salman Agha said, Salman Agha refused to put too much emphasis on the toss. He said, at the end of the day, you have to play well. But if it is a truncated game, then obviously the side that will bat second will have a clear advantage. Man for man, India are a better team. But this game is about handling pressure. And off late, over the last many years, in India-Pakistan fixtures, India have handled pressure better than their arch rivals. The Asia Cup final, was the latest example when India were put under serious pressure, but they eventually got over the line. And when the game became tight, Pakistan bowlers couldn't handle pressure. Let's see what happens. The Pakistan team is training now. India's training is scheduled from 6 to 9 p.m. all to play for. Keep an eye on Revsportz. You will get all the updates and breaking news on this platform. And we have been covering this T20 World Cup and this India-Pakistan game. We are absolutely on top of our game. On that note, this is Shomik Chakraborty from Colombo. Thank you. आप भैयान पहले नाम बताएं। मैं दादा पाकिस्तानी हूँ, वाका रिटायर्ड ओवर, और ये आपका दोस्त है। हाँ बिल्कुल दोस्त है। मैं शांति प्रेम ट्राइकर मैन हूँ, और तो फिर हम दोस्त हैं, सब लोग दोस्त हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान दोस्त है, वो तो कुछ लोग हैं जिन्होंने उसको पॉलिटिकल बना रखा है, बट अदरवाइज हम फ्रेंड्स हैं। और कल का मैच के बारे में आप चाचा पाकिस्तानी आप कुछ बताएं, क्योंकि ये जो कॉन्टेस्ट है ये तो बहुत लॉपसाइडेड है। इंडिया जब भी पाकिस्तान को देखता है जीतता है, तो कल क्या उम्मीदें हैं? आप कल हम हिंदी टीम करने जा रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। कल पाकिस्तानी टीम जो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह जीतेगी, वह भारत को हराएगी, और इंशाल्लाह फाइनल भी कलामों में शिक हो रहा है आप लोगों को। फाइनल भी हम लोग उसे छीनेंगे। मैंने आधा वर्ल्ड कप अभी टाइम हो रहा है 12:30 वर्ल्ड कप हो ना, सपने मत देखो, रात में देखते हैं सपने। दिन में सपने देखने का टाइम नहीं है, दिन को फैलाने के लिए ये ख्याल वो क्या बोल रहा है? प्लेयर टू प्लेयर तो इंडिया अच्छा है। कैसे अच्छा है? ये टीम बहुत प्लेयर बने इंडिया और पाकिस्तान में प्लेयर टू प्लेयर कंपेयर मत करो। मेरी बात सुनो, पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइन आप देख लो, बॉलिंग देख लो, पूरी बाम में है। उस्मान तारिक को लेके वहाँ पे मातम बिछा हुआ है। हमें पाकिस्तान की टीम जब बने से खतरनाक नहीं है। इतनी डिबेट पहला मैच, इतनी डिबेट पाकिस्तान का पहला मैच थी, जैसे इतनी डिबेट आप उस्मान तारिक को लेके इतनी अपनी टीम के ऊपर करो, जरूरत करने की जरूरत नहीं है ना। अगर आप कैप्टन तो कैच पकड़ा जाता तो कैप्टन के सामने पिच लेती आप। लेकिन वो पाकिस्तान ने पहले बोल रहा था कि ये मैच नहीं खेलेगा, उसके बाद बैक ट्रैक किया था, बैक ट्रैक किए खेल रहे। बात क्या है, वो हम पाकिस्तान पति क्या, वो सब देशों के लिए उसने आवाज उठाई। बांग्लादेश की 30 साल क्रिकेट के साथ मोहब्बत, उसने अगर बोल दिया कि मैं आई एम नॉट सेफ इन भारत, तो क्या उसमें होगा? अगर भारत से कहता है कि मुझे पाकिस्तान में नहीं जाना, तो उसके लिए सेपरेट वेन्यू दिया जाता है, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने भी बोला था कि हमारे देश की सबसे बड़ी जो आतंकवादी है, जो उनके मुताबिक है, तो उसको अपना भारत ने जी भी है, भारत के अंदर हम सेफ भी है, भारत उनकी जबान बोल रहा है। तो अब कल बारिश का वो प्रेडिक्शन है, तो
इसमें से कोई मतलब वो एक एप्रीहेंशन है कि कल बारिश मैच धोल जाए तो वक्त खाने तो बच जाएंगे कितना जल्दी के कितना जल्दी एंकर भाई खुश हुए, वो उसने बोला आप यार मानो पे भी पानी फिरने वाला है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप हमारी बिनते ना करते पहले ना, आप मैं को इंशाल्लाह कल मैच के बाद देखा जाएगा, आप में से कोई भारतीय मीडिया मैच के बाद यहाँ नजर नहीं आएगा। और इंशाल्लाह ये जो पुरानी शेर खड़े में यहाँ पे बढ़ के मारेंगे, हम यहाँ पे पार्टी करेंगे, इसी तरह को खराब बना के हम यहाँ पे जश्न मनाएंगे। क्या बोल रहा है कि अभिषेक शर्मा का 20 बॉल हो जाए तो पाकिस्तान आउट? मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी इनको कल से सदमे में होंगे। दजी को पता लगा अभिषेक शर्मा आ रहा है और वो चलते हुए आ रहे हैं, अब ना वो टीम में खेलना, तो अकेला बंदा काफी है यार। और वरुण को खेल पाएगा? वही कह रहा हूँ ना, अभी इनको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन वे में लेंगे जो यहाँ पर चौराहे के बात करें, इसे चौराहे का मिलेंगे, मैच के बाद मिलेंगे और तसल्ली से मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। एक बात बताते जाइए, पाकिस्तान में इंडियन क्रिकेटर्स के लेकर कितना प्यार है? इससे पहले दोनों टीमें एक दूसरे के मुल्कों में भी जाती थी, खेलती भी थी, क्रिकेट में ज्यादा मजा था। यही आप पाकिस्तान में आती, वो कितने ज्यादा पाकिस्तानी इंडियन फैन भी पाकिस्तान जाते, वो देखते एक रान दुपटा आप एक बंदा है उसको सर पे उठा के रखा, इतना सारी फोटो बची है, तो आप ही तभी और पाकिस्तान खुशबू लगा के हम आपको इज्जत दे रहे, आपको पता चले भेजने का पीसफुल कंट्री है। आपने सियासत इसके अंदर बखेली और की तबाही का सबब बने आप लोग। क्या बोल रहा है? पाकिस्तान क्या पीसफुल कंट्री है? क्या बोल रहे हैं? अरे देखिए बोलने का तो काम है, बोल सकते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद इतना पैसा इन्होंने हमारा खर्च करवा दिया है ना, मैच को डिले करा के, सारे जो टिकट्स हैं चाहे वो ट्रैवल के हो चाहे होटल के हो, इतना महंगा खर्च करके आओ, तो मैं भी चाहता हूँ मैच अच्छा हो, वन साइडेड मैच ना हो। लेकिन हाँ, दूसरी बात, इंडिया को जो है वो हल्के में नहीं लेना चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान इस वाले पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेल रहा है, लेकिन जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं हिंदुस्तानी हूँ तो मैं हमेशा चाहूंगा कि हिंदुस्तान जीते, चाहे पाकिस्तानी है चाहेंगे पाकिस्तान जीता, और चाह तो जरूरी है, पर लेकिन जो अच्छा खेलेगा वो गेम जीतेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।